Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another topic about electrochemistry, which is the last chapter of first year course, and I have already uploaded a detailed video about oxidizing and reducing agents and some related MCQs. So before watching this you should watch that video to clear your concept about oxidizing and reducing agent. So here we are going to discuss an important topic, the halogen acids. And as we know, halogen acids are reducing agents or reductants, as we have discussed in detail what is reductant or reducing agent and their strength as a reducing agent. तो halogen acid जैसे कि HF, HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तो reducing agent है, लेकिन we should also know about their strength of reducing agent कि इसमें कौन सा ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, with the help of an important MCQ of ETA 2018. As in the question, I have already written certain equations that sulfuric acid on reaction with hydrogen fluoride give us fluorine and sulfur dioxide. So here we should know that in sulfuric acid the oxidation state of sulfur is +6 and in sulfur dioxide it is +4, while in hydrogen fluoride it is -1 and here it has been oxidized to 0. Now in the same way here sulfur is +6 and in sulfur dioxide it has been reduced to +4, while in the third equation here the sulfuric acid has been reduced from +6 to H2S. Here the oxidation state of sulfur is -2. So actually in all the above three equation halogen acid act as a what? Reducing agent, because in all of these the halogen itself get oxidized from -1 to what? 0, -1 to 0, -1 to 0. So ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था. Dash is reducing agent in the above reactions, HF, hydrogen bromide, hydrogen iodide, all of these. So simply all of these are actually reducing agent, because in all the sulfur has been reduced from +6 into equation 2 +4, while in this one the +6 has been reduced to what? -2. तो अगर क्वेश्चन इस तरह आता कि in the above equations which one halogen acid act as a strong reducing agent, then इसका जवाब कौन सा था? Hydrogen iodide, because it has been reduced the sulfur from +6 to what? From +6 to -2 oxidation state. So ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पर आ सकता है. That in this equations H2SO4 plus hydrogen iodide ये खुद तो क्या हो गया? Reduce, and sulfur जो है ये H2S -2. So here sulfur has been reduced from +6 to -2. So for this reduction it need how much electron? 8 electron. So obviously there should be 8 hydrogen iodide molecules needed to oxidize one molecule of sulfuric acid to what? H2S. तो ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ पर आ सकता है. So here it is the decreasing order of reducing strength of halogen acid, Hi, it is the most strong reducing agent, then hydrogen bromide, then hydrogen chloride, and then it is hydrogen fluoride, because hydrogen iodide क्या देगा? आयोडाइड आइन देगा, और ये क्या देगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, और यहाँ पर क्या है? ब्रोमाइड. तो जैसा कि सेकंड ईयर में आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इसकी साइज़ क्या है? ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम है. सो इसकी क्या ज़्यादा है? पोलराइजेबिलिटी. और जो जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी वो एनाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर तो चार्ज डेंसिटी कम है, साइज चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, साइज यहाँ की कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सो इट इज़ नॉट अ गुड डोनर, सो इट इज़ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. सो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट रिड्यूसेस फ्रॉम
plus 6 to minus 2. So dash molecules of hydrogen iodide are needed, and how much electron are consumed in this reaction? So how much? 8 इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई ये एक स्टिक्योमेट्रिक का क्वेश्चन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर सिंपल यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछते हैं कि यार dash coefficient should be put here to balance this chemical equation. So simply you should know that the sulfur has been reduced from plus 6 to minus 2. Obviously it need how much electron? 8 electron. So obviously there should be 8 iodide ion to produce 8 electron, and itself it ऑक्सीडाइज टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यही एक क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यह आ सकता है. सो वी शुड नो दैट द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड, एंड आल्सो वन क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज. इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ में इस चैप्टर पर अपलोड करता रहूँगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.